A very good afternoon, student. In this lecture of digital image processing, the next topic is the homomorphic filtering. We already done about various types of filtering. So this is one of the filter which is also to be used to enhance the image or to find the optimal result which is at least similar to the original image. So homomorphic filter is to be used. This is the last concept of restoration process. So let's start with the definition. In the homomorphic filtering, first of all we need to know about the model which is to be used. The illumination reflectance model is used in case of homomorphic filtering. So this model is to be used. Why is to be used? Because to enhance the various perspective about how the human view the image and how we get the result. So what we get the result, if that result is not clear, if the image is not clear, contrast is to be increased, or the image degraded due to some noise or degraded function, so we have to enhance that image by using this filter, that is the homomorphic filter. So the frequency domain procedure is to be used in case of the illumination reflectance model. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, तो डैट कंसेप्ट इज टू बी यूज्ड हेयर. That frequency domain procedure is mainly used to improve the appearance of an image by changing the various gray level range compression, and we have to contrast the image enhancement. So जब हमने डिजिटल इमेज की डेफिनेशन पढ़ी थी, तब हमने एक इक्वेशन रीड करी थी कि द फंक्शन यूज फॉर द डिजिटल इमेजेस with the coordinate x and y is f x comma y. For the illumination and reflectance area, जब in the presence of sun हम किसी इमेज को या स्क्रीन को जब विजुअल को कैप्चर करते हैं, देन द illumination and reflection plays the important role. So you can see that video again if you not understand the concept of illumination reflectance model. So we started with further. This equation is basically used. So this equation is mainly used in the spatial domain. But when we are using the frequency domain, the Fourier concept is to be used. Then we do not directly inverse the illumination and reflectance को directly हम inverse नहीं कर सकते. So for that purpose Fourier transformation and the logarithmic concept is to be used. So the illumination components जो होते हैं I x comma y of an image very slowly and affect the low frequencies mostly. जो illumination components होते हैं जो वेरी स्लोली करते हैं, एंड मेनली क्या है कंसेप्ट क्या अंडरस्टैंड करना है कि illumination जो है लो फ्रीक्वेंसी को इफ़ेक्ट करते हैं, वाइल द रिफ्लेक्टेंस एरिया जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को जो है अफेक्ट करते हैं मोस्टली. सो बोथ आर द डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स. सो द मेन करेक्टरिस्टिक जो है वो लीड करती है फॉर एसोसिएटिंग द लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी. तो लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी को दोनों को एडजस्ट करने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं बाय अप्लाइंग द लॉगरिथमिक इमेज. सो लॉगरिथमिक हम अप्लाई करेंगे ऑन द illumination एंड द रिफ्लेक्टेंस एरिया. illumination जो है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए है और रिफ्लेक्टेंस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए है. सो हाउ दिस इज़ टू बी डन, there are the various steps in the homomorphic filter. So homomorphic filter is to be used. First thing is that. Second thing is illumination reflectance model is to be used. Third is we apply the logarithmic for enhancing the image. फॉर लॉगरिथमिक जब अप्लाई कर देंगे देन हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे, देन हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द ओरिजिनल रिजल्ट, कि हमें जो दोबारा से जो प्रीवियस रिजल्ट ही चाहिए. सो दीज एसोसिएशंस आर द रफ अप्रॉक्सीमेशंस जो हमें रिजल्ट देती है फॉर द इमेज एनहांसमेंट. क्लियर? सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ होमोमॉर्फी. लेट्स स्टार्ट विद द steps one by one. So first step is we assume that the digital image f x comma y is equals to the illumination into the reflectance part. So
फर्स्ट वी टेक द लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग हमने बोथ साइड्स लिया, तो जब हम लॉग लेते हैं, लॉग ए बी होता है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी बन जाता है, क्लियर, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो लॉग एफ एक्स कॉमा वाई, तो लॉग एलिमिनेशन ने रिफ्लेक्शन को अलग अलग सेपरेट किया एंड प्लस साइन बीच में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट अप्लाई द फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद लॉगरिथमिक अप्लाई करने के बाद हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं ऑन बोथ द एंड। सो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जे सिंबल है उसे हम लिख सकते हैं जेड यू कॉमा वी। फोरियर ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इज रिटन एज जेड यू कॉमा वी। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम सिंबल्स लेते हैं यू कॉमा वी, सो सिंबल जेड इज टू बी यूज्ड हेयर and f I u comma b represent the Fourier transformation of the logarithmic of the illumination factor in the frequency domain. It is written as f I u comma b. Similarly, the Fourier of logarithmic of reflectance of x and y coordinate is written as f r u comma b. Clear? First step is take the digital image, then take the log on both sides, apply the Fourier. आफ्टर डैट होमोमॉर्फिक फिल्टर की बात हुई है, तो फिल्टर इज टू बी अप्लाइड हेयर। जब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे देन ऑन बोथ साइड्स वी मल्टीप्लाई एट यू कॉमा बी इज द होमोमॉर्फिक फिल्टर हेयर टू बी यूज्ड। सो दिस एट यू कॉमा बी इंटू जेड यू कॉमा बी इज कलेक्टिवली रिटन एज एस यू कॉमा बी, क्लियर। नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू एफ आई यू कॉमा बी, क्या बन गया, अब मल्टीप्लाई कर दिया विद एच यू कॉमा बी एंड ऑन द अदर साइड रिफ्लेक्टेंस के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया एच यू कॉमा बी, क्लियर। थर्ड स्टेप तक क्लियर है। आफ्टर अप्लाइंग द होमोमॉर्फिक फिल्टर, नेक्स्ट स्टेप इज वी टेक द इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो we take the inverse of s u comma b which is written as s x comma y. When we are taking the inverse, then again the symbol is used here as x comma y. So we take the inverse on both the sides, on the illumination side and the reflectance side, clear। and illumination I dash x comma y जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो होल है इनवर्स ऑफ एच यू कॉमा बी इंटू एफ आई यू कॉमा बी इज रिटन एज आई डैश एक्स कॉमा वाई एंड रिफ्लेक्टेंस एरिया इज रिटन एज आर डैश एक्स कॉमा वाई। So we can write this equation as x comma y is equal to I dash x comma y plus r dash x comma y. After these four steps we get this equation, clear। Next we take the exponent. जब हम exponent ले रहे हैं we taking the exponent of s x comma y and on the right hand side जो equation है, so this is written as g x comma y which is the enhanced version of the image, and we are taking the inverse of illumination and the reflectance which is converted into the multiplication part, and finally we get the equation that is g x comma y is equal to I naught x comma y and r naught x comma y, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू ये है एक्सपोनेंट की और आर नॉट की वैल्यू ये है। सो वी आर टेकिंग द एक्चुअल इमेज, देन अप्लाई द लॉग, देन अप्लाई द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, apply the filter, then again in inverse transformation is to be applied, Fourier transformation, take the exponent and we get the enhanced image gx comma y. So all these are the steps for the homomorphic filtering. So go through all these steps and complete this process. With this we are completed the module that is the restoration process.